हाय गाइस, वेलकम टू अनदर गेस्ट एपिसोड ऑफ चलचित्र टॉक्स। ये एक्चुअली दो पार्ट में हमने एपिसोड रिकॉर्ड किया था एंड दिस इज़ आवर एपिसोड विद नेविल शाह. ही इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन. ही इज़ द एग्जीक्यूटिव क्रिएटिव डायरेक्टर एट Ogilvy and he is a part of some amazing podcast like 442 and the internet said so नेविल के साथ हमने बहुत सारी बातें की. वी टॉक्ड अबाउट हिज फेवरेट राइटर एरन सॉकिन. वी टुक अ लॉट ऑफ रिकमेंडेशंस फ्रॉम हिम. बुक्स, मूवीज, टीवी शोज. बुक्स और फूड पार्ट 2 में है. पार्ट 1 में वी टॉक्ड अबाउट हिज फेवरेट स्टैंड अप स्पेशल, स्टैंड अप कॉमेडियंस, एड्स, बहुत सारी चीज़ें गाइस. सो लाइक ब्रेस योरसेल्फ फॉर 2 अमेजिंग episodes with Neville Shah, and here's the part 1. So hi guys, welcome to Chalchitra Talks, and today we have Neville Shah with us. And Neville हमारे चैनल पे अभी recently क्विज में भी आए थे and he is a semi finalist now, और अभी बहुत जल्द आप वापस देखने वाले हैं. And we have been learning a lot of things from Neville. चैनल पे आप देखते रहते हो हम लाइक अग्रेसिव हो गए हैं, हमारे 50,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं. वो मेरी वजह से नहीं है, वो बिकॉज ऑफ योर वर्क इट इज. प्लीज दैट्स नॉट इट. हाँ, But like so glad to have you here, Neville. How are you? जिंदा हूँ यार, चल रहा है बस. वो भी यार वही हमें थोड़ी आपसे ना मतलब अच्छी रिकमेंडेशंस चाहिए, थोड़ी फील गुड मूवीज और ये सारी फील गुड एनीथिंग की हम गलत रिकमेंडेशंस इंसान को ले लेंगे आया आपसे. आप. नहीं नहीं, अभी हम सॉर्किन की बात करेंगे तो आपके लिए फील गुड जैसे होगा. सो पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ. जैसे सॉर्किन का मेरे को पता है, आपका हैशटैग सॉर्किन इज गॉड भी आप इंस्टा पे बहुत यूज करते हो. द ऑब्सेशन यू हैव फॉर एरन सॉर्किन के अलावा आर्टिस्ट फील्ड में या क्रिएटर्स फील्ड में हुआ द पीपल जो मतलब सॉर्किन के लेवल पे जिनसे कोई आप नहीं है सॉर्किन के लेवल पे, किसी भी फील्ड में कोई भी नहीं है. वो शख्स एग्जिस्ट ही नहीं करता अनफॉर्चुनेटली. नो, सो इट्स नॉट दैट. देयर आर लाइक मैंने एक पोस्ट बहुत पहले लिखा था सेइंग दैट Monet painted lilies, Clapton plays the guitar, Sorkin writes dialogue. See, I think it's one of those things, no, like you fall in love with something because of the time that it took you through. West Wing is my go-to show, but I can't start watching it from season 4 episode 5. Like I can't. I have to do season 1 episode 1. और मैं 15th time start कर चुका हूँ. This is the 15th time I'm going to be watching West Wing. I've already finished 5 episodes. And I will continue to watch it. मैंने सॉर्किन का काफी कुछ देखा है. वेस्ट विंग अभी मेरी लिस्ट पे है. माय चल क्वेश्चन bye. इज कि See you. my question is, how bad does it get after he left? Is it bad or So here's the thing: the guys who wrote the shows after Sorkin left are people who were with him at the start. Plus, they'd gotten a lot of consultants in season 3 and season 4. Didi Myers used to work in the Clinton administration. Eli Attie used to work in the Clinton administration. So there were people with repute who knew what was happening to be able to at least keep the plots alive. Like I've seen the show so many times now that by the time you get into season 6 and season 7, you're like, because season 6 and season 7 is just pure drama. It's fucking unreal drama. That's what it is. after he left? After he left, Sorkin left end of season 4. Huh. 5, 6, and 7 has been matched by somebody else. I also think that the dramatic flair on the writing and the direction and the stuff could be a virtue of two things. One is that you entered a digital universe, because by season 5 you were in 2004. Did they retain walk and talk? Did they retain convoluted dialogue? Of course they did. Did they retain the meter of dialogue? Yeah. In fact, in season 7 there are 2 episodes written by Bradley Whitford, who plays Joshua Lyman. I think the show holds up. Nice. Otherwise I would not have been able to watch all 7 seasons और every time I went through it. तो जैसे ऑफिस के साथ जो दी ऑफिस जो स्टीव कैरल के जाने के बाद, डू यू थिंक द शो वाज एबल टू लाइक, आपको मतलब उसमें कितना लगा अगर कंपेयर करें कि दोनों में वहां I कैरल don't गया think या so. सॉरी? I don't think so. I think that over there, Steve Carell carried the show. It's the same in Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. When Mihir left, the show wasn't the same. I think it's different when show creators and directors, Right. etc., leave, and when cast members who are really predominant. I mean, you look at Grey's Anatomy, right? You look at Grey's Anatomy. In Grey's Anatomy, when McYummy died or whoever, like as that happens, your favorites tend to move. The reason why Grey manages to hold its viewing is because I think over the years they've been able to create characters that you love, and those characters suddenly take
the forefront and thing, but also it's fairly dramatic now. It's a lot more drama. Like with the Sandra Oh seasons and all, it was beautiful. And now it's almost, you've gotten so invested in Grey that you will watch the show for 17 seasons. It doesn't matter. So I think it's always different. I also think when directors, writers, showrunners, show creators leave, they're replaced by showrunners, writers, creators, and directors. And the skill set of a good showrunner or a good show creator or whatever it is to keep the ethos of that show alive. Right. Absolutely. And so it's easier to lose a show creator or a show runner and still have that show's Ethos maintained. that जो नींव है शो की वो बरकरार रहती है. It's not going to think. But when an actor leaves, first of all, you are creating a plot point for the actor to disappear in some way. So there's a lot of these things that I feel create the problem. आपके हिसाब से कोई बंदा है कि यार उसने ज्यादा कुछ नहीं देखा है सॉर्किन का सोशल नेटवर्क के अलावा, क्या सेकंड इन पॉइंट क्या होगा कि भाई तेरे को सॉर्किन में घुसना है ना, दिस इज वेयर यू शुड स्टार्ट फ्रॉम? सॉर्किन का एक डायलॉग है, मूवीज आर अ फ्लिंग, टीवी शोज आर अ लव अफेयर. Okay, so it totally depends on what you're looking for. If you are looking for a fling, तो उसकी filmography चार्ट लो ना. You do Few Good Men, you do American President. You can skip Malice. I think Sorkin also wants to skip Malice. It's not a bad film, but I don't think it's a Sorkin film. Like, it's okay. It's not. मैंने Malice भी देखी है 2-3 बार. That's not the point कि भाई क्या हो गया आपको. But outside of that, I think you pick up anything that Sorkin does, it's genuinely outstanding. I know there's a lot of people talk about like repetition and people who talk about the fact that he repeats his themes a lot and stuff like that. Sure, he repeats a couple of jokes and stuff like that, but those are just tropes that he uses to hold the meter through. They're not integral to the plot. What I also like about Sorkin is that he writes both sides of the argument. Hindol, tera wo question tha yaad hai in the quarterfinal quiz that we did. We spoke about the fact that you seem like he's a closeted Republican because he writes the Republican side so well, or he writes the right so well, or the opposing argument. If you want to watch Sorkin in order of thing, then you should start with A Few Good Men, do American President, do Sports Night, do West Wing. That's how you would probably start before you go into the rest of his filmography and his TV show. Sports Night also is 2 seasons. Outstanding writing. It's 20 minutes. So it's sitcom format in that sense, where everything resets at the end of the episode. So I was also thinking about Salim Javed. Like in the 70s, they had a very distinct style and themes that they kept coming back to. But their material almost was director proof. They're also working in Manmohan Desai, they're also working with different directors, and the film will still hold up no matter what the director is. So do you think Sorkin's material is director proof, or is it like you need a certain kind of creator who understands how to deal with this? A great question. This is from my analysis of Sorkin. It is not an expert opinion. मैंने कुछ ऐसा study नहीं किया ये वो. It's important to understand that. The reason why I say it's a great question is because I've thought about this way too many times in my life. If you read his screenplays, no, मैं अभी नया वाले के लिए रुका है, but I'm saying if you read his screenplays, you will be able to see the film in front of you, because it's not. I mean, yes, it's a lot of heavy dialogue, but the dialogue makes you direct it in a certain way. That's the only way that you can do it. Like you look at Fincher. Fincher does a lot of static camera planted on a tripod, watching things from a wide angle proscenium lens कि सब एक्शन आपके सामने खुल रहा है भाई. मैं क्लोजअप बहुत स्पेयरिंगली यूज करूंगा ताकि आपको क्लोजअप का इफेक्ट पता चले. Even if he goes to a solo one shot, the one shot is still like a mid or a slightly wider than a mid with character and things like that. So he does. Fincher ends up doing that. To answer your question, if you look at the pilot of West Wing, you look at the pilot of Sports Night, you look at the pilot of Studio 60 on the Sunset Strip, all these 3 pilots have been directed by Thomas Chalamet, okay, who is his directorial partner at the start of his career. Cinematically, Few Good Men is Rob Reiner. American President is also Rob Reiner, I think. His partners, his collaborators sort of stayed the same. What they ended up doing is understood that for Sorkin's dialogue to work, you're going to have to let the rhythm of dialogue take the scene forward, right? You cut to now Greg Motola,
who directed the first episode of Newsroom. When you see Newsroom, while it is still super entertaining, it is still more dramatic in nature. There are those gentle crash zooms. And I'm not saying drama is wrong. I just mean that there is one in which they spoon feed you drama. ऐसा ये देख important है. And then there is another moment which works with ठहराव, which works with an interesting edit point, which works with like a pause or like an emphatic delay. All of those things. But when you look at Newsroom, मेरे को Newsroom का pilot directorially उतना पसंद नहीं आया. Content wise भारी पसंद आई. There is a opening monologue at the start of Studio 60, which is pretty much the same in rhythm and structure as the opening montage of the Newsroom. See the cuts in the Newsroom one and see the cuts that is there in the Studio 61. In the Studio 61, you never lose track of his speech. Yeah, it's almost Newsroom, a single take. Yeah, no. I mean, there are cuts. You go behind, you go backstage, you go into the director's box where he's like, "All right, this is real. Don't talk to me. Don't talk to my control room." What she's saying is, you're 90 seconds away from having your kids move to a public school. Blah, blah, blah. And then he's like, "Okay, fine." He's told people to change the channel. All of this rhythm is building while his point has already been made. Whereas if you look at the Greg Motola piece, it's taken rhythmatically up to, I don't know what the fuck you're talking about, Yosemite, stops, and then it starts to become slightly more dramatically different. So I think it's director proof in the sense, I mean, he shouldn't direct his own work because we saw Molly's Game. ये भी एक अगला क्वेश्चन आने वाला मेरा था भी कि ये था अगला question. So what about the Sorkin the director? I thought Trial of Chicago 7 was better directed than Molly's Game for sure. But I also think that was because the Trial of Chicago 7 had that many more places to go to. It had history as a backdrop. It had all of that, right? With Molly's Game, while it was a real story, you were still shuffling between the narratives of what it is. Now let's just go into the cinematic universe of Sorkin, and you look at Social Network, which is a biopic, which was written by Aaron Sorkin, directed by David Fincher. Unbelievable piece of work. Kept the rhythm of the dialogue going. Wo opening scene, everybody's read it, right? Like Fincher wanted it to be 5 minutes and 23 seconds, and so he's made them do like 100 takes. वो तो उसका वैसे भी popcorn takes तो 100 ही होता है. He basically went to Sorkin's house, said, "You read it at the pace you want to do it," and then he got them to do it at that pace, faster करके वो कर रहा था. You look at that, and then you look at Jobs, which was directed by Danny Boyle. Again, the rat-a-tat-ness of the dialogue, all of that is the same, but I felt it lacked scale. Did he do a great job with it? I thought he did a nice job, like the transitions in corridors, a little bit of like, the time lapses as he sort of do it. But that idea is fucking fantastic, that I will tell his life in 3 scenes. In 3 scenes and in real time of 3 scenes, which is genuinely fantastic. So I thought it felt short in direction. मेरे को भी मतलब कभी रिवॉच करने की ऐसे कभी वो नहीं किया यार कि जाके जॉब हाँ मतलब बट लाइक सोशल नेटवर्क तो ऐसे है कि कभी भी चला लो, लाइक इट्स लाइक वन ऑफ दोस थिंग्स, कभी भी चला लो. जॉब्स के लिए ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कभी. You look at Charlie Wilson's War, also written by Sorkin, directed very differently. So can you consider his work director proof? I think yes, as long as the director at least accepts the fact that it's a dialogue driven plot more than a visual driven plot. Sorkin ने खुद बोला है that the only outdoor scene I can write is Tom Cruise playing baseball. I can't write outdoor scenes. I have no idea how to write them. खुद बोला उसने. Sorkin के अलावा who are the writers that you look up to, both from like Bollywood, Hollywood, be it a TV show or a film? David Mamet, unreal work. Salim Javed. I don't know why they wrote only so many films. शोले शक्ति दीवार के बाद लिखने की जरूरत है कुछ. Why do you have to make people feel bad? Just quit, na. You've written Sholay Shakti. It's mind blowing. Shakti. What a great film. मेरे को तो अभी भी वो जो शक्ति में जो अमिताभ बच्चन बच्चा है और उसमें एक रिप्ले होता है उसके लाइफ में बार बार मार डालो उसे, लेकिन मैं अपने फर्ज से बेईमानी नहीं करूंगा. मेरे को अब तक वो लाइन बाय हार्ट उसी टोन में उसी इन्फ्लेक्शन में याद है. शक्ति में वो शॉट भी है ना, वो ऐसा मरीन ड्राइव पे चल रहा है ऐसा बैग लेके और फिर कैन को लात मारता है और फिर दूसरी बार कैन को लात मारता है तो अमिताभ बच्चन बड़ा हो गया. ब्रो क्या, और ये 80 की पिक्चर है ब्रो. 80 में ये ट्रांजिशन कौन सोचता है यार. 80 whatever 2 or 83 or whatever. Hindol, what year is Shakti? 82.
I really like Zoya Akhtar's work. I really like the Nice. amount of meta thought that is put into it, which may be unnecessary for people and all that, but मेरे को बहुत अच्छा लगता है, bro. मेरे वो गली बॉय में वो आलिया भट्ट walking behind her mother as her mother walks in front. Bro, ये symbolism नहीं है हम लोग के सिनेमा में. आप वो कुत्ते वाली पिक्चर भी देख लो ना, वो दिल धड़कने दो, दिल धड़कने हाँ दो। दिल धड़कने दो, उसमें भी है यार. I mean, if you technically look at it, हम आप क्या कौन है वो फिल्म, but उसमें भी है cinematic-ness. अरे You नहीं know what I'm नहीं trying यार to say? बिल्कुल Like the fact that fight where Anil Kapoor pushes this guy up against the wall, it's fucking great. It builds, it has rhythm, it has all of that, right? जैसे एक सीन मेरे को अगर हम दिल धड़कने दो की बात कर लें यार, the scene in which Shefali Shah is eating that chocolate cake. Correct. अरे fuck यार, मेरे हिसाब से she is one of the finest filmmakers of the country. और मतलब luck by chance तो क्या फिल्म है वो. I like both of Shakun's films actually. कपूर एंड सन्स तो ब्यूटीफुल है मेरे हिसाब से. अब चाहे कोई बोले कॉपी है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग बहुत सुंदर है. वो गाने वाला सीन मैंने उसके साथ डिकंस्ट्रक्ट किया था मेरे चैनल पे यार. जो थॉट जाता है एक सीन डायरेक्ट करने में, आई लाइक दैट. आई एम अ ह्यूज मजरू सुल्तानपुरी फैन. Huge. He is by far India's best lyricist. The varied nature of Majru Sultanpuri's ability is its thing. So I'm a huge Majru Sultanpuri fan. डेविड मैमेट बोल दिया मैंने. डेविड मैमेट यार क्या आदमी है यार, क्या लिखता है वो. उसी की है ना ग्लेन रॉस. The one where the steel की जो balls वाला जो. You're talking about the Alec Baldwin watch scene. You see this watch? Yeah. So क्या फिल्म है Glengarry Glen Ross यार. So देख लो भाई Glengarry Glen Ross. अपने कोएन ब्रदर्स यार वो भी सही लिखते हैं. If you look at Tarantino's work, like if you look at Tarantino's screenplays, what I really like about Tarantino's screenplays is उसका जो handwritten screenplay leak होता है ना, जब leak होता है तो it's beautiful because he's not written it in interior day. उसने literally description लिया, उसने कविता की like कहानी की तरह लिखा है screenplay. Nice. Which is so great to sort of watch. Stephen King on writing, it's a great piece to sort of read. William Goldman, unfortunately मैंने थोड़ी बहुत फिल्म्स देखी हैं उसकी. बुच कैसिडी एंड द सनडेंस किड एंड ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन सबको मालूम है, बट आई डोंट रियली रिमेंबर और आई हैवंट फॉलोड टू मच ऑफ हिज वर्क. आल्सो बोल सकते हैं क्या यार वुडी एलन का फैन हूं यार. हाँ मैं भी हूं. I really like rom-coms, and I think Nora Ephron is fantastic with romantic comedies. It's not just from a directing standpoint or a writing standpoint. I think the way she'd be, because a lot of rom-coms have the journey of time, like want to take you through months and months of things like ये हुआ फिर ये हुआ, ये देखो depressed है, ये देखो sad है, ये तो खुश है, ये तो नाच रही है, ये तो नाच रहा है, all of that. I think Nora Ephron's ability to be able to tell you montages, just watch a compilation of Nora Ephron's montages. मेरे को नोरा एफ्रॉन चमक नहीं रहा, थोड़ा बताएंगे. Sleepless in Seattle, You've Got Mail, Harry Met Sally, रिचर्ड कर्टिस बहुत बड़ा फैन हूँ, एल्बर्ट ब्रुक्स बहुत बड़ा फैन हूँ. I mean, you can also go into like the past if you really want to go into the past and like overthink it. Then you want to think of like, you know, चलो ज्यादा past भी नहीं जाते हैं अपन. David Lynch, or if you go even further back, if you look at Truffaut and Godard and all these people. But वो when you're in college and all, they're fantastic filmmakers. Once you get out of college, you're like, आप अभी बैठ के ऐसे देख सकते हो कोई ऐसे Godard की फिल्म? I can, but I think it's more from an academic perspective. I don't watch it for an entertainment perspective. That is an absolutely fair thing to say. But that's not true for Kurosawa. I can watch Kurosawa again and again and again and again and again, and it's not. It doesn't. वो entertainment purpose के लिए भी देख सकते हो. हाँ, Kurosawa is fucking and you're like ये Seven Samurai में like you're still. It's like the जो जीता वही सिकंदर cycle scene. You know, you're like तेरे को मालूम ही नहीं है कि आमिर खान जीतने वाला है. यार जब ना हमारे पास पैसे नहीं होते थे ना, हम ज्यादा फिल्में देखते थे. अब पता नहीं क्यों नहीं देख पाते. आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज मेरा सब टॉरेंट बंद हो गया, मेरा सब पायरेसी साइट्स बंद हो गया ना. मतलब मेरा सब चालू है बट डाउनलोड करने की यार. So I've stopped watching a lot of foreign cinema. I used to watch a lot of like not English and not Hindi cinema. I've just stopped doing that. I regret that a lot. Like when I saw Amer Asparos, I lost my mind. मेरा तो फट गया था दिमाग में. बोला भाई ये क्या है, कौन ऐसे फिल्म बना. वो जो कुत्ते वाला ओपनिंग सीन है, मैं तो अभी भी I can't watch it. Just that in the background as sound design.
ब्रो तो क्या मैंने एक फिल्म देखी थी 7 बॉक्सेस यार, कितनी प्यारी कहानी है यार. सो there's this really small town and there's one guy in that and उसको ना एक कैमरा वाला मोबाइल फोन चाहिए. ठीक है, ये इसका मोटिवेशन है रे, कैरेक्टर का मोटिवेशन है. पूरा पिक्चर क्या उसके ऊपर फिल्म बनाया है यार. एनीवे सो दिस गाय ही वांट्स अ कैमरा वाला सेल फोन. उसका एक बहन है, उसका एक लवर है, ये वो. दिस गाय मस्ट बी 16-17 दैट एज. तो एक बंदा आके उसको बोलता है कैन यू डू वन फेवर फॉर मी. ही वर्क्स इन वन स्मॉल थिंग एंड ऑल, ऑड जॉब, ज्यादा पैसे नहीं है एंड ऑल दैट. एंड ही सेज यार कल सुबह तक ना तू ये 60 डब्बे अपने पास रखेगा क्या, these 7 boxes will you keep them with you, एंड तेरे को कल सुबह एक फोन आएगा, तू बस फोन उठा लेना और जहां डिलीवर करना है तू वहां डिलीवर कर दियो, ये ले फोन. और जो फोन देता है ना उसको, वो कैमरा वाला फोन है. ये कैसा ना बोलेगा आदमी. तो उसने फोन लिया और फिर वहां से जो ब्रो वो कैमरा, एक शॉट मेरे को याद नहीं है वो फिल्म में, जो टॉप एंगल है, पूरा फिल्म ऑन ग्राउंड है. उफ क्या सही फिल्म बना है. Then there is which is that film, it's a Malayalam film, very well written. I love the character shifts in it. What is it called, एक बंदा है जिसको गोल्ड चेन चुरा लेता है. नहीं जिसमें वो शॉपिंग मॉल में उसका फोन गुम हो जाता है, तो द मॉल का जो शॉपिंग ओनर है वो उसको मिलता है फोन. And not owner, the one of the workers there, and the graph of this really powerful guy to this really thing, it's called yaar, what is it called yaar? Come on man, somebody help me out yaar, how are you all doing like this? What is the, मैं मेरे एक दोस्त को फोन करता हूँ, रुक जा. ये बात रखते हैं भाई, ये बात रखते हैं. Hey, sorry, sunna. Sorry, I'm on a live stream. I just need to ask you one question. Dude, what is that film, dude? Where there is a phone... Chapakurush. Okay, bye. Wow, so long just to get to one fucking film name. This whole thing I should have written these down. But anyway, Meghna Gulzar. I think she does some excellent work. Dude, Razi, अभी भी मैं देखता हूँ ना तो मेरे को pause करके देखनी पड़ती है. You know, when you're watching a thriller or whatever, you get very nervous and you're like, so I have to literally pause it or I have to skip because नहीं हो पाता मेरे से. I'm like, how can you hold it? Dude, नीरज पांडे, same thing. एक शाउट आउट मेघना गुलजार का. मेरे को ये लगता है पिछले 20 साल की तलवार वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलीवुड फिल्म्स है पिछले 20 साल की. मैं मतलब बहुत ज्यादा बात करता हूँ, मेरे को तलवार कुछ ज्यादा ही पसंद है. तलवार में बेसिकली देयर इज दिस पाकिस्तानी सिंगर आई यूज्ड टू लाइक अ लॉट. सो लास्ट में एक गाना आता है, इंसाफ इज बाय दिस पाकिस्तानी सिंगर, हर नेम इज आरुज आफ्ताब. Guys, listen to her. मैं उसको कब से सुनता था, मैं ऐसा था ये तो किसी को नहीं बताऊंगा, इतनी कूल लगती थी. वो एक सेल्फिश डिस्कवरी थी. मैंने कहा फक, इसने मेघना गुलजार ने इसको कहाँ से ढूंढ के ले आई वो. एंड लाइक मेरे को तलवार का जैसे वो इरफान और तब्बू का जो है ना वो बहुत अंडररेटेड लगता है. एक जो फ्रस्ट्रेशन है ना, जो द कपल विच इज ऑन द वर्ज ऑफ अ डिवोर्स, और जो प्यार नहीं है, वो जब वहां भी खड़े होते हैं, क्यों कर रहे हो डिवोर्स, क्यों चाहिए, नहीं करते प्यार, अफेयर किए हैं, जानने नाम भी जानने आपको. And the frustration you see in that couple, like मेरे को इतना खतरनाक लगता है ना कि तब्बू बहुत अंडररेटेड है यार. तलवार में लोग बात ही नहीं करते. तू विशाल भारद्वाज की बात कर लो और फिर see the usage of तब्बू. Dude, Vishal Bhardwaj, what a अरे यार man, very like excellent filmography. You know, I really also like, and he used to be an ad filmmaker, Shujit and Dibakar. Like even Madras Cafe, if you look at Shujit Sarkar's Madras Cafe, I thought it was really well done, very well researched, very well shot, very well treated, handled. And the writing on Piku, so she's also an ex-advertising person who's written Piku. I'm not even going to attempt remembering the name now. So जूही चतुर्वेदी, करेक्ट. तो जूही मकैन में काम करती थी, आई थिंक. या मकैन. जूही चतुर्वेदी भी वर्ड, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखती है अपनी स्क्रिप्ट्स. शी इज आल्सो अवे फ्रॉम फाइनल ड्राफ्ट एंड एवरीथिंग. हाँ, पॉसिबली बिकॉज़ इतने न्यूआंस के साथ अगर तुम स्क्रिप्ट लिख सकते हो तो तुम्हें सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत है. एंड यू हैव टू हैव लिव्ड दैट टू बी एबल टू राइट दैट. तो इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स टू बी एबल टू 100%. और मेरे को तो कुछ ज्यादा ही हुआ है क्योंकि लाइक आई हैव गॉन थ्रू इट ट्वाइस विद बोथ माय पेरेंट्स. सो लाइक आई हैव लाइक truly fucking outstanding work. 1 अक्टूबर का जो चीज, मतलब मेरे को अभी मौका नहीं मिला किसी से डिस्कस करने का. अक्टूबर में छोटी सी सटल सी चीज है कि स्टार्टिंग में जब वो गिरती है ना छत से, तो यू इमेजिन लाइक अ फॉल टू बी लाइक वेरी गोरी एंड ऐसे कुछ एकदम से नॉइसेस होंगी. वो गिर जाती है
और आपको 5 सेकंड तक पता भी नहीं चलता कि बहुत इम्पैक्टफुल उसको लगी है भाई. मतलब इतना, इट्स लाइक एनी, इट कैन हैपन टू अस वाली जो फील आई थी मेरे को, क्योंकि उसको ऐसे थोड़ा जितना अंडर प्ले करके दिखा ना, वो थोड़ी सी पीछे थी, ड्रिंक ले रही होती है, कुछ ले रही होती है वो, एंड शी जस्ट फॉल्स ऑफ द रूफ, और पूरी मूवी फिर उस पे बेस्ड है. आई एम लाइक, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था यार. Yeah, there's some excellent work that, like, I think if we spend time on story, it's thing. Yeah, man. I think the fact that you're churning movie after movie after movie, I think that you invariably will fall short on something. And I'm not talking about movies like Avatar or those movies which require technology and therefore take 3 or 4, or Pixar or any of these things which, Pixar takes 3-4 years to be able to make a film because of whatever. But I'm saying, even like, you just look at like regular Hollywood film, like you look at the new Top Gun or Mission Impossible, which isn't necessarily cinematic genius. It's a good entertaining film, and it's masala, right? It's the equivalent of masala. यार वो भी उड़ाने में उनको 2 साल लगता है यार. कोई स्टोरी लिखता है, कोई स्क्रीन प्ले लिखता है, फिर वेट होता है, फिर एक्टर्स रिहर्स करते हैं, फिर एक्टर्स फ्लोर पे आते हैं, फिर डायरेक्टर तब तक मगजमारी करके प्रोड्यूसरों के साथ झगड़ के तब तक आधा पतला हो चुका होता है, ये सब. And then after that there's post production which takes time, there's sound design, there's so much work that goes into a film, that if you are churning 3 films a year, I just think that you're not giving justice to one film. And I think that first act, in this country, we really don't know how to hold that first act together. You look at, I think Malayalam cinema does such a great job with that first act, because you get so involved with those characters, you're like, इधर हम लोग को ऐसा, अच्छा ये है, ये है, ये है, सिर्फ एक्सपोजिशन करना है, और वो भी गंदा एक्सपोजिशन. ऐसा भी नहीं कि हाय आई एम बैटमैन, हाय आई एम नागार्जुना, हाय आई एम दिस, यही करके मैं खाना खा रहा हूँ एंड ही इज ईटिंग फूड. लाइक दे जस्ट वांट टू डू लाइक एक्सपोजिशन लाइक दैट. देयर इज नो कैरेक्टर डेवलपमेंट वर्क that you're putting in, and I'm obviously talking about it as a pejorative. ऐसा नहीं है कि सब scenes में नहीं होता है और सब फिल्मों में नहीं होता है और whatever, but मेरे को इससे एक एक्सपोजिशन आपने बोला, इट्स लाइक अ थिंग दैट आई टॉक अबाउट अ लॉट. एक ये विंस गिलिगन का बेटर कॉल सॉल का एक पॉडकास्ट है, वेरी सेज दिस थिंग, कभी कभी ना इतना ऑन द नोज होता है, जैसे जैसे BCS में चक और जिमी का जो रिलेशन, तो मान लो हिंडोल और मैं भाई हैं, तो व्हेन अ स्क्रीन प्ले इज बैडली रिटन ना, तो ऐसी लाइन आ जाती है कि अगर हम दोनों में कुछ लड़ाई हो गई तो, Hindol, how long have we been brothers for? And he's like, it's the worst way to do it ना, कि to establish कि ये दोनों भाई हैं. कितने साल से भाई हैं यार हम लोग, ऐसे थोड़ी कोई बोलता थोड़ी ऐसे. थॉर्किन की भी जो मास्टर क्लास थी, ट्रेलर में भी एक वो वर्ड आता है कि ये वर्ड कभी भी बोली में यूज ही नहीं होता. एक there was this term that I don't remember, सॉर्किन इसको, वो स्टार्ट ही ट्रेलर उससे होता है, we don't use this word, और हम हमारी स्क्रिप्ट्स में वो वर्ड लिख रहे हैं, बट आपने बोली में कभी ये सुनना है किसी को बोलते हुए देख के? वो सारी चीजें हम भूल जाते हैं यार. मतलब लाइक कि स्क्रीन प्ले कैसे एक बिल्कुल अलग लिविंग बीइंग है कंपेयर्ड टू जो हम किताबें भी पढ़ते हैं उससे. इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था कि इवन इन द क्विज वी हैड सम क्वेश्चन एंड उसमें आपने कहा बैड स्क्रीन राइटिंग, तो आई हैड कि व्हाट आर ट्रोप्स दैट लाइक यू आर सीइंग अभी, नॉट जस्ट बॉलीवुड, लाइक रीसेंट लास्ट 3-4 साल में जो आप ट्रोप्स देख रहे हैं व्हिच शुड जस्ट completely go away. I'm done with the trope where you set the setting in either today or the future. That's your cold open or your first scene, and then you cut to 5 years earlier. Fuck yeah. I'm fed up of that trope. I'm totally done with that trope. I'm using that trope right now in what I'm writing right now. But I'm fed up of that trope. I'm done with that trope. And you know how old that trope is? I mean, Sholay had that same trope. So I'm saying that trope is ancient, and we're still trying to cover ourselves with that bad time jump. Yeah, 100% agree. So I think that one trope to has to stop. Please just stop it. That, and I think exposition that does चलना पार्टी करते हैं और cut to party. Just stop. Please, like, come, just put some effort into it, no? मैं एक छोटा सा एक ट्रोप बताता हूँ जैसे मैंने देखा. मैं टेड लासो देख रहा हूँ अभी एप्पल टीवी पर, रियली रियली लाइकिंग इट. ब्रो बस क्या, मैंने ही तो रेकमेंड किया है, ऐसे क्या बोल रहा है? ऑलरेडी बोल दिया मैंने. ब्रो प्लीज ब्रो. टेड लासो में वही चीज है ना कि आप
जो भी नेगेटिव स्पेस है उसको कैसे मतलब आप हटा दो कि पता है कि आज क्या होगा। तो जो पहला मैच है टेड लासो का कि वो आता है एंड कमेंटेटर सेज हियर वी गो, और आपको लगता है बुरे तरीके से हारते हुए दिखाएंगे, तो वो बोलता है हियर वी गो कट टू देयर वी गो, और ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है 1-4 से हार गए। एंड लाइक दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हमें पता है पहला मैच हारेंगे, सो हियर वी गो से देयर वी गो। मतलब टाइम बचा है ना, दिस इज व्हाट गुड राइटिंग इज। आई रियली लाइक सच थिंग। I think a lot of times we just like, and I think that this is also happened because interval सिर्फ यहाँ होता है ना bro हाँ, मैंने वो कौन सी वाली थी तुझ में रब दिखता है वाली, रब ने रब ने बना बना दी। दी। रब ने बना दी जोड़ी, आई सॉ रब ने बना दी जोड़ी इन द यूएस। मैं कॉन्फिडेंट था कि ये सीन पे इंटरवल होएगा क्योंकि वो प्रिंट में ही आ जाता है इंटरवल, हाँ हाँ ठीक है। मैं उठ रहा हूँ ब्रो, कोई उठा ही नहीं है क्योंकि हिंदी फिल्म में वहां ब्रेक नहीं है ब्रो। अरे बाप रे। सोच, मैं 2.5 घंटा इतना बड़ा कोक पी के मुंह पकड़ के बैठा हूँ और देख रहा हूँ, और वो तुझ में रब दिखता है चल रहा है। मैं बोला वो फक। So I'm saying the popcorn scene that has been written in, no, is that's where the fluff writing sort of, I think, sort of start happening. वेरी Because ट्रू। वो ऐसा इंटरवल के बाद आके एक हाँ, वो 5 scene है मिनट का एक जिसमें वो बफर irrelevant टाइम, scene है, हाँ, बफर टाइम जो irrelevant scene रखते है हैं वो। जिसमें लक्ष्मीकांत बेर्डे आके कुछ करेगा, हाँ you know, that kind of like irrelevant शिट to plot. आई इमेजिन अब जोधा अकबर नहीं देखने गया, बच गया। आयरिशमैन उधर देखता तो सोच अरे थिएटर में fuck। बच गया, रिलीज नहीं हुआ। Now that we're talking about writing, so I was going to talk about comedy, humor as well. So you have a lot of dark material as well. So what is it that like India में हम फिल्मों में तो like थोड़े अनुराग कश्यप वगैरह they are able to manage dark humor, but राम in गोपाल stand up वर्मा we have ब्रो, सत्या yeah कंपनी, ओ फक सॉरी गाइस, प्लीज बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ हाँ. मणिरत्नम की फिल्में देखो, बाकी सब छोड़ दो दुनिया में, सिर्फ मणिरत्नम की फिल्में देखो और फिर देखो कि मणिरत्नम सॉन्ग्स को कैसे शूट करता है। तो मेरा वही था कि why is it that हम like stand up में और उसमें dark comedy उतना क्रैक नहीं कर पाए, और have we cracked it, what is it, that is one. And second, sometimes I find कि हमारी कॉमेडी बहुत लिटरल होती है, like especially 90s वगैरह में, like everything A for apple करके spell out करना पड़ता था. Do you see it changing in films at least, or what is it like, what is the problem with our humor? मैं डार्क कॉमेडी करता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम फॉलोइंग 28,000 है, सिंपल है, मैं रिलेटेबल नहीं हूँ। आई थिंक इन दिस कंट्री एंटरटेनमेंट इज ऑलवेज बिन समथिंग दैट इज meant to distract, and I'm talking about it being ingrained into your system like that. I'm not saying that that's the only job of it. I'm saying it was always, which is why everything was larger than life, which is why it was always like ye kahani wo kahani badi kahani ye mahal dekho, that willing suspension of disbelief, that construct holds truest for Indian cinema, because there's liberties that we take that are at no end. First of all, I think we do a lot of dark comedy in English, which automatically cuts your base. There are very few Hindi dark comedians. Are there any like just jumping in, are there any good Hindi dark comedians मतलब जो हिंदी में dark comedy कर रहे हैं in India that you would like to talk about? Or even just Uh, general dark comedians in India? I think the definition of dark also is different in this country, because like Anthony Jeselnik is dark, but I think that in our country we consider reality dark. That's the problem. मेरा डिवोर्स का बात करेगा तो सब लोग बोले ओ क्या एजी काम कर रहा है, ओ डार्क कर रहा है। अरे नहीं, तलाक हुआ है तो हुआ है ना, बहनचोद, क्या फर्क पड़ता है। और मेरा मम्मी गुजर गया तो मैं उसका बात करेगा, ओ डेथ के बारे में बात कर रहा है, हाँ, लेकिन मैं रियलिटी के बारे में बात कर रहा है। इट्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट an imagined genocide and enjoying it, which is where it becomes dark, right? Like that's when it starts to become dark. Anthony Jeselnik का एक स्पेशल का नाम है Fire in the Maternity Ward. ये conceptually dark है, you know what I'm saying, because it's fiction, it's not real, it's, and you are being able to construct a joke that is that, you know what I'm saying. So I think even our definition of dark comedy is slightly skewed. I love this point, very true. To a lot of people saying just real things. I mean, मैं टेक्निकली स्पीकिंग डार्क कॉमिक नहीं है, मैं 4 सुसाइड जोक बोलता है यार। आई मीन इट्स नॉट टेक्निकली अ डार्क कॉमेडी शो, इट्स जस्ट दैट रियलिटी, और वो थोड़ा डाइजेस्ट करने को डिफिकल्ट है हम लोग के देश में, तो एज अ रिजल्ट ये डार्क कॉमेडी हो गया। एंड आई थिंक दैट दैट्स रियली द प्रॉब्लम विद द स्ट्रक्चर एंड द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ व्हाट वी कॉल डार्क.
in this country. And I think people go in with the intention of being entertained, and if you are not necessarily entertaining them in any way, whether it is an emotional piece of theater or whatever, if it's not relatable to them, if it's not entertaining to them, if it's not whatever, तुम नाटक देखने कितने बार जाते हो यार साल में, लेकिन तुम टीवी पे कॉमेडी शो तो बहुत ही बार देखते हो. हाँ बट लाइक कोई है जिसने ये भारत में क्रैक किया हो इन रिगार्डलेस ऑफ लाइक एनी मीडियम, कॉमेडी में, मूवीज में, द डार्क क्वोशंट कि भाई डार्क भी कर रहे हैं, एक्सेसिबल भी है. I think Ramu's come close a couple of times, maybe. I think in writing, we've got a lot of people who've been able to do it. I think Khushwant Singh used to do it really well. On some level, I think Toba Tek Singh can be considered dark. So Manto, maybe. Shantata Kot Chalu Hai, kisne likhi thi? Vijay Tendulkar. Vijay Tendulkar. I think Phula Deshpande. A lot of work in Malayalam cinema that does the dark Right. genre of comedy really well. From a comedian's standpoint, no, yeah, because I don't think comedy has been taken as that ever. You ये have इंडिया की legends बात of कर रहे हैं comedy. ना? In India, in हाँ, India, हाँ, I don't think you have legends of comedy. Yeah, you have Kishore Kumar. Like Kishore Kumar is beautiful with pathos and melancholy and being able to squeeze laughter from anything. There's Mahmood, there's Johnny Whiskey Walker, Whiskey Walker. Yeah. That one. There's Johnny Lever. I mean, Anarkali ka phone tha, ice cream khana zaruri hai, is by far the most crazily bizarre line ever written in Bollywood. Anarkali ka phone tha, ice cream khana zaruri hai, kya line hai. But I think that comedy is taken as comedy, and comedy is not taken to be dealing with real topics and stuff like that. Death at a funeral तो है ही नहीं ना हमारे देश में. Fish called Wanda, Death at a funeral है ही नहीं ना हमारे देश में तो. चलो एक बार भारत की हमने थोड़ी बात कर ली, जैसे हमने कुछ लोगों की, खुशवंत सिंह की, मांटो की बाहर हॉलीवुड वगैरह में कॉमेडियंस में हु आर द पीपल हु आर गेटिंग इट राइट इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी, नॉट स्पेसिफिकली कॉमेडियंस बट लाइक जो डार्क जॉनर समझते हैं. I think everybody gets it. Like you look at Death at a Funeral, dude, Death at a Funeral पे उसने बॉडी गलत भेजा है उसके बाप का और वो बोल रहा है ब्रो ये मेरा बाप नहीं है. वो बोल रहा है पर फिर ये किसका, अरे मेरे को क्या मालूम मेरा बाप नहीं है. फनी है. I think also a lot of people consider dark comedy to incite a ooh reaction. That's not dark comedy. हाँ, interesting. That's not, it's not just because you shock an audience or just because you say something controversial doesn't necessarily make it dark. Chappelle is not dark. Yeah. Chappelle is phenomenal, but he's not dark. You know what I'm saying? Like he's just truth. He's reality. He's truth bombs. Doesn't Is Bill Burr dark? No, but Bill Burr can be dark. The only person who only does dark jokes is Anthony Jeselnik. Like, right? Like it's in that sense, it's only him who'll do the shit, who'll trigger people on Twitter and things like that. There was one news article that said this couple, blah, 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 got married and died in a car crash in one day or whatever. So basically, कल शादी हुआ था और आज मर गया वो लोग. तो उसने वो स्टोरी को रीट्वीट किया, बोला ओ वेल मैरिज इज नॉट फॉर एवरीवन. उसका एक ग्रैंड मॉम का जोक है जो बहुत ज्यादा फनी है. Just because you don't see the joke come, and I won't spoil it. Watch it in Thoughts and Prayers. That's the Jeselnik special that you may want to watch. Special से related एक था कि Yeah. which are your favorite specials? एक वो है, and second you have directed a lot of specials. So just from a lay perspective, कि what goes into directing a special? हाँ. Like, how do you add to the humor if you do? पर And हाँ, what एक is करके हाँ, लेते हैं. हाँ एक करके लेते हैं. पहले आपके जो मन पसंदीदा हाँ, स्पेशल्स specials हैं. कौन सा है? George Carlin, for sure, a lot of his work has, I mean, मैंने genuinely. नेविल मैंने कार्लिन के देखे हैं, क्लिपिंग्स देखे हैं, बट कोई ऐसे बताओ ना कि ये वाला एक स्पेशल जाके देखो. मेरे को Live at genuinely चाहिए. Carnegie Hall. उसका जो लास्ट और सेकंड लास्ट स्पेशल भी था, हाँ. unreal. So I would look at Carlin for sure. I think Lenny Bruce used to do some really great work. I like Bill Hicks, but I just think that for his time he was outstanding. I think that he was a shock comedian. I think he was a contrarian comedian. I think he was a comedian that just said stuff that was shocking but funny, or said it funnily. I really like Chris Rock. I'm a Seinfeld fan to one level. I'm a Ricky Gervais fan for sure. There's a guy called Dylan Moran. He doesn't have a special on Netflix or Amazon or anything. He's Irish, so he's got this drawl and he's beautiful.
I'm a big Dylan Moran fan. There's Judd Apatow, there's Patton Oswalt, there's you can't. I mean, I'm a comedian. You're Yeah. asking me to हाँ, मेरे भगवान के इसमें नाम जैसे ले. फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियंस में जैसे अगर आपको I don't look at it like that. I don't look at it like that. I think Sarah Silverman has one of the funniest specials. She's done a rape joke that is so funny. You know how they say that a man only should never do a rape joke and a woman should never can do a rape joke and this, that, and the other. And there's always a debate of you should never do a rape joke. Just watch Sarah Silverman do it. It's fucking outstanding. There's Eliza Schlesinger. There's Natasha Leggero, Ali Wong. I'm a big Ali. I saw Ali Wong live in a club in Colorado. Michelle Wolf. I saw Michelle Wolf live. So there's a lot of, and I know you'll come and ask me India mein kaun favorite hai, or फिर मैं ऐसा diplomatically बोलेगा नहीं and all of that. But I can tell you who I envy in India, and I envy them because Nice. they are writers. And I don't have the ability to write my jokes. My process is not, I don't physically write a joke and then I go. Like you look at Kanan, I think Kanan is by far one of the most intelligent. Okay, so the Kanan is the most recommended stand-up comedian on Chalchitra Talks now. Aishwarya Mohan Raj के episode में था, इस episode में हो गया, KV के episode में था. It's like everyone is saying the same thing, dude. And I directed Kanan, so like I know the work that he puts into a joke and all of that, and how excited he is by just meta-ness and overthinking and underlaying ideas and things like that. So I'm a big fan of Kanan. I'm a big fan of Kautuk. I'm a big fan of Azim. Kautuk, Azim, Kanan, no, to me, they're writers, and that's what pisses me off. Like Shakya, he's a writer, dude. So his jokes are so well crafted, no? They're so well rounded off. There's no loose words. The Yeah. analogies are right. The meter is right. The tempo is right. All of that. मेरे को बहुत time लगता है उधर पहुंचने को. बहुत ज़्यादा time लगता है. I think Sumaira Sheikh is so fun. Sumaira Sheikh, dark comedian in India in Hindi. If you can catch Sumaira, please catch Sumaira. Sumaira is phenomenal. She's actually a dark comedian and she's actually does it in Hindi and she does it so well. एक बार अब books वाला ले लेते हैं ना, तो Yavani, if you have any questions there. There are a lot of non-fictions that a lot of people recommend if you want to enter advertising. Do you think that's a hook? Can you actually learn something from self-help and non-fiction, especially when it comes to advertising? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि realities ही अलग है. I mean, people read books and stuff like that. By all means, hey, people, squeeze this. If you are a copywriter, read the copy book. Simply so you know what's happening. Piyush on advertising is there. Bernbach on advertising. Ogilvy on advertising. Sab hai, but there is no other experience like live experience. Like there's absolutely nothing. And what kind of books do you usually tend to read? Like, are they non-fiction or fiction? I read fiction predominantly, or at least I even like my history told like fiction. So I think it's that format that I like a lot. If I have to read a non-fiction book, that non-fiction book better give me, like I've read, like, I mean, even from India, if you just look at Veer Sanghvi Mandate, it's a non-fiction book and it's a great book and you can read it. आपने एक चीज बोली जो जिसमें मैं पूछ रहा था, history told like fiction. Fiction. And I think like a lot of people don't pick up this genre because they get मेरे को तो bored. पता ही नहीं इस genre, मतलब मैं समझा ही नहीं इसमें कौन सी किताबें हुई जैसे. There is historical fiction which exists. हाँ, Okay. Which is, for example, The Man in the High Castle is a historical fiction show. It's what if the Nazis had won, right? Like it's an alternate reality. There's a book called My Lady Jane. It's a funny book and it talks about Lady Jane and the time that she lived in and stuff. So it gives you perspective of what's happening around you and stuff like that. But it's a fiction story in that sense. It slightly deviates from the truth. There are a lot of books that are written in the style of fiction that is history. So for example, they will take you through what is that book? It's basically the story of the 5 battles of World War II. But what they've done is they've told you through a protagonist's lens, kind of like Saving Private Ryan. It's reality. This is what's happening around you, and this is the truth, and there is this battle, and there is that battle, and stuff like that. But there is a protagonist taking you through it. I like reading books like that, but I also read a lot of I read a lot of history if I have to. In that sense, I'm a fan of that. हिस्ट्री में मतलब जो भारत की अगर किसी को हिस्ट्री समझनी है, मैंने जैसे शशि थरूर की एक आधी किताब पढ़ी है, एरा ऑफ डार्कनेस वगैरह, मेरे को तो सही लगी थी, बट लाइक मेरी बहुत पुअर नॉलेज है हिस्ट्री की. India after Gandhi and India before Gandhi. Forget the fact that there are so many other books and so much more that you can learn and so much more that you can read. India after Gandhi, India before Gandhi.
please read those two books, and you will genuinely get a good perspective. Because I mean, मैं ये joke भी करता हूँ कि Indian history in your textbooks ends at 1947. उसके बाद कोई history नहीं है हम लोग के घंटे, सिर्फ civics अरे है. हाँ हाँ Yeah. बिल्कुल Correct. सही बात. You want to understand about the election process and stuff like that, mandate, it's a tiny book, dude. वीर संघवी का इतना छोटू सा बुक है, बट वो ऐसा अप टू बीजेपी इलेक्शन फटाफट बता देते थे. ये हुआ टक करके फटाफट बता देते. So it's a great book. Are there also any books that you'd like to recommend to people? My 3 favorite books of all time are To Kill a Mockingbird, Catcher in the Rye, and The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. आई थिंक ये तो तीनों वानी की भी है ना. आई थिंक कैचर इन द राय तो डेफिनेटली है. Yeah, we were actually discussing. I think Dhruv Sehgal, we were talking about books which have made you emotional and books that just changed something inside of you. And he said Catcher in the Rye. And I think like हिंडोल ने भी उठा हाँ, मैं ली. हिचहाइकर्स लड़- मेरा अभी यही पे रखा हुआ है. ये फेंक दे, ये वाली फेंक दे. Because it's got mostly harmless and all that crap in it. I Throw it know, away. but ये No, मुझे it किसी does that. No, sorry, doesn't count. Sorry. रख दिया मैंने. गलत वाली है. Sorry. गलत वाली. It stops only at the 4th part. Anything after that is bleh. Don't read it. Catcher in the Rye, I think for a lot of boys is a book that moves them. I think it's also when you read Catcher in the Rye. Because it's actually quite a misogynistically shitty book. But it's also when you read Catcher in the Rye. Holden Caulfield is an asshole, but I think it's such a great book. Every guy is that, yeah, and it's beautifully written. It's unreal. Yeah. So Catcher in the Rye, To Kill a Mockingbird, और मैंने To Kill a Mockingbird का एरन सॉर्किन वाला प्ले न्यूयॉर्क में देखा था. मैं तो पागल हो गया था, dude. एड हैरिस प्लेड एटिकस फिन. मेरे को जब टिकट ही मिल गया था, मैं ऐसा रोया था और वैसा स्टेज के सामने, और मैं सोच रहा हूँ कि सॉर्किन आएगा क्या. ऑफ कोर्स नहीं आया, बट लाइक डूड, जिस दिन मैं सॉर्किन को मिला उस दिन तो खत्म है मैं, मतलब हो गया. आपके बुक से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है वानी? yeah, I think just one. Like, what is that one book that you gift everyone? This is something I've asked everyone. So, like, one book that you have probably gifted the most in your life. मैंने ना रिसेंटली ना 2-3 बुक्स बार बार गिफ्ट करी हैं. वन ऑफ देम इज अ बुक कॉल्ड लैम्ब, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू बिफ, जीसस चाइल्डहुड फ्रेंड. द बुक इज अ पेज टर्नर. इट इज कॉन्स्टेंटली फनी. There is no stopping on that, because the concept is it's another gospel that's being written by Jesus's best friend when he was a child. I also read a lot of other shit. Like I read screenplays, I read poetry. I have one big, huge pet peeve that I will, if I see an Urdu poem or a kavita or a couplet or any of these things, and I don't know a word, मैं तभी का तभी अगर meaning नहीं ढूंढा ना, मैं अपने आप को मार दूंगा. Like I need to know it right then, and then for the next 2 or 3 days, no, I'll try to figure out to use that same sentence in a sentence, in that word, but in a poetic sense. It'll be bad constructs, but I think that's how the word sort of then stays in your head, so you remember it and you can appreciate it in its entirety. तो हाँ, so I read anything. I mean, if it comes, मतलब भाई एक टाइम पे तो बहुत ही डेस्परेट होता था भाई, फ्लाइट की मैनुअल के अंदर जो भी पढ़ रहा था वो भी पढ़ लेता था. मैं तो कुछ भी पढ़ता था ब्रो. I would read anything. You mentioned screenplays, तो अगर मतलब just for someone to get a hang of how screenplays should be written and stuff, 5 non-Sorkin screenplays. हाँ, non-Sorkin is the key. हाँ. Shawshank Redemption, Before Sunrise, All the President's Men. I think it's a beautifully written screenplay. I would read Glengarry Glen Ross. I would read Dog Day Afternoon. Birdman, great screenplay. Gravity is a nice screenplay as well. I would look at the Juno screenplay. Very different in pace, in rhythm. Fargo screenplay for sure. If you want something that's really depressing, 3 Billboards Outside Ealing, Mississippi. यार 5 से ज्यादा तो हो गए ना. Any Bollywood movies, मतलब even if you haven't read the screenplay, which have like good writing. Dil Chahta is a great screenplay. I really want to read the Uri screenplay for some reason. I don't know why. I just want to see if the pace holds true even in the narrative of the screenplay, because it's cut really well, right?
Yeah. I want to see the special 26 screenplay and the baby screenplay only because I want to see again if the pace holds true there. I would love to read the Gully Boy screenplay. Yeah. It'd be nice to read शोले का ओरिजिनल ड्राफ्ट अगर किसी के पास है तो जो टाइपराइटर पे उसने टाइप किया होगा या उर्दू में लिखा होगा या जो भी है वो प्लीज भेज दो. मुझे अमर अकबर एंथनी का स्क्रीन प्ले पढ़ना है क्योंकि उसका स्क्रीन प्ले इतना पतला होगा. वो मूवी में कुछ 21 गाने हैं बे. स्टोरी क्या है? गुलाम का स्क्रीन प्ले पढ़ना है, सरफरोश अरे का स्क्रीन प्ले पढ़ना है. एनी बैड स्क्रीन प्लेस की यार इसका जैसे कि इसको हाँ लिखते क्या ये है गलतियां नहीं करनी चाहिए. मतलब कि करते क्या है मतलब उनके पास प्रेजेंट क्या होता है यार मतलब ऐसे कभी कभी यार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यार इसका नहीं देखना होता है ना कुछ. कुछ तो That's the होता होगा thing. फाइनल नहीं ड्राफ्ट यार, खोलते तो dude. होंगे वो मतलब बिल्कुल नहीं यार. Are you crazy? I think there is an entire school of filmmaking that operates on script pages. आज लिखेंगे. हाँ कि आज सेट लग गया है, आज इसके ऐसा हिसाब थोड़ी से होता होगा सीन मतलब बनाते हैं. There was an entire time when this happened in Yeah. Bollywood. It's not like it did not. There were writers writing on set. I'm not talking about tweaking. I'm talking about writing on set. So there was नहीं, जैसे definitely. या मैं वो सोच रहा हूँ कि वो तेरे लिवर की जगह किडनी आ जाएगी किडनी की जगह वो मतलब हमने एक पूरा पॉडकास्ट किया है लास्ट ट्यूसडे. प्लीज जाके देखो. या टेस्ट का वो है मतलब वो मैंने देखा था स्टार्टिंग में सब म्यूट पे चले गए सबने उस पर पहले तो ट्रेलर देखा था काफी सही. तो स्क्रीन प्लेज वाला भी हमारा आई थिंक सेक्शन हो गया. डायरेक्शन की एक बार अब बात कर लेते हैं. हिंडॉल इफ यू कैन प्लीज टेल अस योर क्वेश्चन अगेन. So my question was ki we spoke about stand-up specials earlier and you've directed some as well. What does a director bring to a stand-up special? Like, do you add on to the humor, or is it just ki I have to make sure the coverage is good enough? I think coverage is good enough is the most important Yeah. part. There is no doubt that that is important. There's a lot of like fucking like nonsense technical shit like यार कुछ कैमरा 90 मिनट पे कट जाएगा तो you have to make sure that you're cutting and rolling different cameras. But that's all technical crap. I try to find a theme within the show. That to me is important. There is no doubt that I don't write a single word in the special. The entire delivery, bit, concept, construct, everything is the comics. I'm there to park cameras and capture it in the best way possible. For example, in Kanan's special, if you see the way he's framed, he's not framed in the center in the profiles. He's framed off center with negative room talking to somebody on this side. And then in this profile, he's talking to somebody on this side. And as you go through the show, you'll see that the gap, wherever it was possible, of the person who he's talking to keeps reducing. And that's an intentional call where we sort of try to box him in. And then finally you realize, because the flip on the show is that it's like Fight Club. There is no Fight Club. It's the same person. So when you come back to it and the stage flips, you realize that he's that. So the final box is that. So there's those kind of elements that you'll do. You'll try to work with the set design to try and figure out whether you can involve or imbibe a little bit of a joke within the set. I try to add a lot of lensing calls that will help tell the story better. It's important to be able to get that setting, that environment closer to what the comic is or who the comic is, the personality. आपने जो बोला कि सेट के एलिमेंट्स को यूज करके मेरे को राहुल सुब्रमण्यम का याद आया. क्राउड वर्क शो में उनकी बॉटल गिर जाती है and he's like, oh my god, my water just broke. I'm like, dude, No, but that's not me. That would never be me. That would be Rahul Subramaniam because a bottle yeah, I'm fell just down. saying कि वो मेरे को बहुत funny लगा था यार. कितना अच्छा presence of mind, और even if it was like planned, like कितनी अच्छी writing. Yeah. No, I doubt that was planned. Can you direct your own special? Like, if you are the comedian and Good you question. I have a would very also. and you have a very specific कि मुझे ऐसा let's say चाहिए, this is the theme, मेरे को ऐसा set चाहिए. So would you be able to do that? Yes, but I would still need a technical director to make sure कि सब कैमरा रोल हो रहा है, सब फोकस पुलर फोकस पे है, कैमरा तो नहीं हिल रहा, ट्रैक पे झटके तो नहीं है. I would need a technical director to make sure that vision is seen through. आपका कभी बहुत बड़ा फुटेज का मिसप्लेसमेंट या ऑडियो फकअप हुआ है Dude, कि I've जिससे deleted a podcast. What are you talking about?
ओ अच्छा, ये तो टेस्ट वाला जो है हाँ। वो शिट फुटेज का बहुत बहुत सारा गफला होता है डूड. ऑन अजीम शो आई रिमेम्बर हमको टाइम नहीं मिला था, कॉस्ट्यूम ट्रायल करना था इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो हमने बस ऐसे कैमरा के सामने शर्ट पकड़ी थी, बोला हाँ ठीक ठीक लग रहा है, चल 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 जा कपड़े बदल. लाइक इट वाज लिटरली दैट वाज आवर कॉस्ट टेक चेक. ओके वी डिडंट हैव टाइम. ऑडियंस अंदर आई तो पहना, शूट कर रहे थे. ओ जो देखा तो मेरे को लगा कि यार ये तो फ्लिकर हो रहा है. फ्लिकर तो नहीं है. फिर बोला कि अरे यार ये तो जिटर हो रहा है. नहीं जिटर तो नहीं है, ये तो मॉयर हो रहा है. एंड देन इट वाज मॉयर. सो नाउ I had to make a decision whether we need to stop the show and restart. And then so there's those kind of things that you need to figure. But then no, I was with a very well equipped Siddharth Vasani DOP who was like नहीं नहीं रुक, हम लोग शटर स्पीड इंक्रीज करता है, वो कुछ तो कचरा बोल के ठीक कर दिया उसने. तो बोला ओके, तो पहला 7 मिनट नहीं है जो हम लोग यूज कर अरे सकते था वो fuck. फिल्म. कौतुक का पहला वाला स्पेशल में पूरा फर्स्ट शो में एक लाइट फ्लिकर हो रहा था और हम लोग को दिखा ही नहीं कैमरा पे. नहीं पर It चलो was one of लाइट those. फ्लिकर तो फिर भी हाँ, समझ आता है कि हाँ चलो जी लेंगे इसके साथ. नहीं जी But लेंगे like- ब्रो, पैच वैच नहीं- खरीद के पूरा फिक्स करना पड़ा था. हाँ बट लाइक आई एम स्टैंड अप टॉकिंग अबाउट कि फुटेज ही जैसे वो मतलब दैट इज लाइक अनदर लेवल फक अप. नो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा इधर जब मैं कुछ डायरेक्ट करता हूँ मेरे को होता है सातों कॉन्टिनेंट में उसकी एक कॉपी हो तब जाके मेरे को नींद आएगी. बिकॉज No, दैट इज माय बिगेस्ट फियर इफ आई डायरेक्ट समथिंग एंड अगर उसकी फुटेज मिसप्लेस हो गई. ओहो but बहुत खतरनाक. there are backups over backups even when you're हाँ. shooting live. So when you're Yeah. shooting live and you're shooting with 7 cameras, यार एक कैमरा शायद कुछ हो जाए या whatever. But हाँ. जाते जाते एक बार हम म्यूजिक की बात कर लेते हैं नेविल. लाइक व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक आर यू इनटू? old school stuff. I like rock, I like classical, I like a lot of old songs. Some of the new stuff in Hindi though is just not listenable only. You can't hear it only. I'm a big lyrics fan, yeah. Nice. It's a problem of that. That's a problem. So if the lyric gets me, no, तो मतलब फिर तो मैं मतलब वो हाँ कहेगी तो भी खुशी से मर जाऊंगा मैं यारो, वो ना कहेगी तो खुद खुशी से कर जाऊंगा मैं यारो. क्या क्या लाइन है ना गुलजार का, वो लाइन है ना, एक बार फिर दहलीज पार करा दे. उफ क्या थॉट है यार. टल्ली होके गिरने से समझे हमने ग्रेविटी, इश्क का प्रैक्टिकल किया था भाई, क्लैरिटी क्या मतलब. आई एम सेइंग टू मी, आई थिंक व्हाट रियली गेट्स मी इज लिरिक्स. I listen to a lot of classical, I listen to a lot of indie, I listen to a lot of Indian indie as well. But there is one problem. For me to fall in love with a new song, I have to hear it accidentally. I will never seek out new music. I have to accidentally seek out new music. So लोग भेजते रहते हैं ना, ये गाना सुन, ये गाना सुन, ये गाना सुन. लैंड से नहीं सुनने का मेरे को, क्योंकि मेरे को तेरा टेस्ट पे भरोसा ही नहीं. अगर मेरे को पसंद आया तो I would have accidentally discovered it and then I'll be like अरे मस्त गाना है. I don't know why, it's a weird thing. Like if I'm listening to a Spotify playlist और मेरा हाथ में साबुन लगा है और अभी मैं नहीं कर सकता कुछ और गाना बदल गया और मैं बोला ओ शिट ये अच्छा गाना है, ये accidental discovery allowed है. मेरे को तेरा गाना नहीं सुनने है, sorry. I keep going back to a lot of my music from like Hemant Kumar and Kishore Kumar and Lata Mangeshkar and Asha Bhosle and Kumar Sanu and I'm a big Shahrukh Udit Narayan fan, including all of that, all the way to Nache Hai Delhi Hile Hai London, Naach Naach Jaise Ravina Tandon, that song. I'm oh fuck, Amit Trivedi, dude. That Ghanchakkar ka album is unreal. Lyrically also, it's phenomenal. So I listen to all of that. Then I do everything from Pete Seeger to Mozart to Ludovico Einaudi to Arctic Monkeys to Pink Floyd to Red Hot Chili. I love Red Hot Chili Peppers, Cake. I listen to Gorillaz. I listen to Tool, Dave Matthews, Led Zeppelin. But these are all really popular. Cake is probably a band a lot of people have not heard of. केक मैंने सोप्रानोज के थ्रू डिस्कवर किया था. सोप्रानोज में जो उसका बंदा होता है माइकल इम्पेरियोली, उसका जब पहली बार अखबार में नाम आता है कि हाँ मेरा मर्डर हो गया और लेके आई एम अ माफिया नाउ, और फिर जब वो पीछे गाना बजता है दैट वाज अ केक. I would have never expected कि आप घनचक्कर recommend करोगे. So it's like one of my favorite albums. उसमें एक गाना है झोलू राम, which I think झोलू राम पधारे. Yeah, which is sung by Altaf Raja and Altaf Raja. Dude, lyrics are in something Sketchy else. Behavior, Kanan, Kenny and I got Altaf Raja to sing a song. मैं जैसे एक एड्स पे क्वेश्चन था, जैसे एक एड ना मेरे को अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत पसंद आता, ड्यूरेक्स का एक एड था जिसमें द गाय एंड द गर्ल आर ईटिंग एंड लाइक बंदा बहुत फास्ट खा रहा है एंड बंदी धीरे धीरे खा रही है
और वो एक ड्यूरेक्स के क्लाइमैक्स कॉन्डम्स काटता है, मैंने कहा कितना सही ऐड है। देन समवन टोल्ड मी, तेरे को पता है दिवाकर ने डायरेक्ट किया, लाइक फक क्या बात कर रहा है। तो ऐसे हम लोगों को जो नहीं पता होते, जो सही में दिग्गजों ने ऐड डायरेक्ट किए हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी हु आर स्टिल काइंड ऑफ इन द इंडस्ट्री, जो हमें भी नहीं पता होता, तेरे को पता है भाई ये ऐड किसने डायरेक्ट किया है। तो ऐसे कुछ है जहाँ पे हम ऐसे फक क्या बात कर रहे हो, तेरे को पता है ये ऐड किसने बनाया था। So David Fincher has directed a Nike ad called Fate. Yeah. Then there's Inaritu directed Thank You Mom. I mean, in India, though, Dibakar is first an ad filmmaker, then a film director. Shujit Sarkar, advertising director before became film director. Ram Madhwani, advertising director Yeah. before became filmmaker. Vinyl Matthew, dude, मेरा कितना Cadbury का काम किया है उसने. There's too many of these legends of the game that play the game. That you'll never know. Vikram Aditya Mutwane has done some stuff for me. Has done one ad for me. Sorry, Shakun has done one ad for me. And for me, as in like with me, is what I mean. For me, as in like for Cadbury. कोई ऐसे ब्रांड्स है मतलब अच्छा एक मिनट मुझे मेरे पास एक बहुत अच्छा सेगवे अभी द क्वेश्चन आई वाज गोइंग टू आस्क. सो यू हैव वर्कड अ लॉट ऑन कैडबरी एंड नाउ कैडबरी इंडिया में व्हाट दे डिड हैज बीन लाइक अ क्लासिक केस स्टडी फॉर media students. So I just wanted to know ki what has your experience been like in understanding, okay, this is where the brand needs to go from where it is, and like just how do you come up with scripts for a brand like Cadbury now? Bro, ये तो मेरे को भी मालूम नहीं है. Honestly, there's no, I mean, honestly, we know there's a lot of information that's processed in a creative brain and it just keeps churning, and we, with disregard for timelines and everything and poor account management on the firing line, स्क्रिप्ट दे दो और हम लोग बोल रहे हैं नहीं आ रहा है, तो फिर एक डेडलाइन आएगा, वो दिन पे किधर से तो स्क्रिप्ट आ जाएगा, कैसा आता है वो मालूम नहीं है मेरे को. बिकॉज द प्रोसेस ऑफ एवरी क्रिएटिव थिंग इज ब्रीफ आया, आइडिया आ गया, ओ माय गॉड अमेजिंग आइडिया, फिर सुबह उठेगा बोलेगा शिट क्या टट्टी आइडिया है, फिर 4 दिन ऐसे ही जाएगा कि टट्टी आइडिया, ओ माय गॉड आई एम गोइंग टू बी फाउंड आउट, ओ माय गॉड आई एम गोइंग टू बी फाउंड आउट, ये मेरे को पता, हाउ इज दिस द वर्स्ट आइडिया आई एवर क्रैक्ड इन माय लाइफ, ये वो, फिर अच्छा एक आइडिया है चल सुना ही देते, मेरे को मालूम भी नहीं चलेगा कि नहीं, फिर पसंद आ जाता है. अपने आई थिंक मिस्टर हॉलैंड्स ओपस रेकमेंड की थी टिप्स पे, and I watched the movie after you recommend. I cried a lot. So but like in a good feel good kind of way. So even we are doing a series ki like we're trying to recommend feel good things. So something like probably not on those lines, but just feel good things that you keep going back to, like your comfort food kind of my movies. comfort food is only one thing, it's Aaron Sorkin. That's my comfort food. There is no other comfort food that apart from Aaron Sorkin, that like just movies या कुछ जो मतलब लोग अभी देख सकते हैं. Schitt's Creek is something that a lot everyone should watch. I think Ted Lasso is something you should watch. And the reason why these things are nice to me, because I think there's a certain sense of hope, aspiration, righteousness, optimism that sort of comes, and it's considered to be a fallacy or a weakness in the protagonist, which then turns out to not be so. I mean, I know I'm ruining it and breaking it down, but I think that's really why they sort of have what they have, right? Like that's why they become what they become. Kaminsky method देख लो, रोगे तुम लोग. लंबा जाने का है तो हाउस देख लो, ग्रेज एनाटॉमी देख लो, स्टार्ट फ्रॉम सीजन 1, stop at season 5 because that's where I've stopped. Please watch Sopranos. Any old Bollywood, like आपका वो वाला आपने काफी एक्सप्लोर किया है, तो प्री 2000s एनी आप बॉलीवुड मूवीज कुछ रेकमेंड करेंगे अपार्ट फ्रॉम शोले शक्ति एंड दीवार जो हमने पहले बात की थी? प्री मींस आई कैन डू इवन ओल्डर ना. आलम आरा नहीं जाना हमको, आलम आरा YouTube पे नहीं मिलेगा. के थोड़ा बाद एक रुका हुआ फैसला, दिल है के मानता नहीं. I would try to do the Aziz Mirza, Juhi Chawla, Shah Rukh Khan, that universe of films as well, which is that फिर भी दिल है हिंदुस्तानी and then like duplicate. I really like दिल तो पागल है. आंखें, what a film. Govinda, Chunky Pandey, जो जीता वही सिकंदर, one of my favorite films of all time. Amar Akbar Anthony, one of my favorite films of all time. Shaan, big Ramesh Sippy fan. His son also did na Bluffmaster. It's a nice film. I like that also, but I don't know if that's pre 2000. Ghulam, Sarfarosh, Khamoshi, Sanjay Leela Bhansali's best film. If you can get a copy, DM me also, tag me in a story saying found the copy, and then I'll chat with you and you send it to me. Of thoda sa romani ho jaye. It's a beautiful musical. So there's that. Kabhi Haan Kabhi Na. Chamatkar, dude. Ye bichu mujhe kaat. There's too many, putting too much pressure, dude. I can't. This is like great. Thank you so much, Neville, for doing this. जाते जाते
हमने आपसे ही सीखा है, तो मैं आपको क्या हाँ। बोलूंगा, हमारे लोगों को चलचित्र टॉक सब्सक्राइब करने के लिए बोल Yeah. दीजिए। गाइस तुम लोग को शर्म नहीं आता है? तुम लोग ये सब शो, ये लोग कितना, तुम लोग दिन में 4 वीडियो डालते हैं, 2 वीडियो हाँ, डालते 2 हैं या कितना? 3 या हाँ, हाँ। इतना फ्री का एंटरटेनमेंट मिल रहा है, फ्री मिल रहा है बाय द वे, हराम खोरों, तुम लोग को फ्री में एंटरटेनमेंट मिल रहा है, 2 वीडियो दिन का तो मिनिमम मिल रहा है, एंड आई डोंट इवन नो हाउ दे मैनेज इट, ये लोग करते क्या है, एंड स्टिल ऑल यू नीड टू डू इज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, एंड दैट इज हर्टिंग योर थंब, यू hurting your fucking index finger. Fucking do it. If you're one of them, you should feel bad. Apparently 60% of the people who watch their stuff on Chalchitra Talks, that watch the stuff, don't subscribe to it. 60%. तुम 2 वीडियो दिन के फ्री में देख रहे हो, तुमको पैसे भी नहीं मांग रहा, सुपर चैट भी नहीं मांग रहा कोई, सब्सक्राइब बटन दबाना है, शर्म करो यार, दबा दो प्लीज, क्या कर रहे हो यार, डू इट नाउ, नाउ।